start. So first of all, you have a rotational spectra, right? Rotational spectra. This is called microwave active. Is observed in the frequency range of 3 into 10 to the power 10 hertz to 3 into 10 to the power 12 hertz, right? And especially a heteronuclear molecule, for example, HCl, CO, HF, such kind of heteronuclear molecule are basically microwave active or rotational active. Right? Now, if you see that energy of rotational molecule, energy that is h cross square by twice I due to rotational, due to the rotation of molecule under the action of microwave, the rotational energy can be written as h cross square by twice I j into j plus 1, where j is the rotational quantum number and j can take value 0, 1, 2, 3 and so on. 0 for ground state, right? Ground state, then first excited state and so on. And so on. Okay. And I is called moment of inertia. And I is equals to mu into R naught square, where R naught is the bond length. R naught is the bond length. And mu is the reduced mass of molecule. Right? So this is the energy in terms of what? In terms of joule or electron volt. This is the rotational energy in terms of joule or electron volt. Now, if you calculate that energy in rotational spectra, we always used to calculate that energy in terms of centimeter inverse. So it means the energy in terms of centimeter inverse, that is epsilon j, that is nothing but EJ divided by HC. और इसका जो expression आते हैं, that is nothing but B J into J plus 1, right, in centimeter inverse. Where B is called rotational quantum number, and that is equals to H by 8 pi square IC. ये सबसे ज्यादा important है आपका rotational spectrum का, कि how B is varied with bond length and reduced mass. Na? So B is nothing but H by 8 pi square IC. You can see that rotational quantum number B is actually inversely proportional to the moment of inertia of molecule. जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे है ना, आधा प्रॉब्लम इसी के बेस पे सॉल्व हो जाती है. ठीक है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई I. ठीक है, और I आपको पता है म्यू आर नॉट का स्क्वायर. इसका मतलब क्या है कि रोटेशनल क्वांटम नंबर जो है that will be rotational constant B inversely proportional to mu, and also it is inversely proportional to bond length का square, right? This is the relation. In fact, जो आपने total energy लिखे थे EJ, this is the rotational energy, right? So this is nothing but H cross square by twice I J into J plus 1, right? And this energy actually ये आपका rotational energy, and rotational energy means only rotational kinetic energy, right? L square by 2I. rotational kinetic energy को आप L square by 2I लिख सकते हो. तो यहाँ से 2I कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ से आप angular momentum कोई भी स्टेट का निकाल सकते हो. And that is actually inversely angular momentum is independent on I
इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑन म्यू एंड आर नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि ग्राउंड स्टेट का एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट एक्सिस का, so directly just you have to substitute the rotational quantum number j. For example, for ground state j will be 0, so L will be 0, and for first access state j will be on, and corresponding L will be root over 2 h cross and so on, है ना। So कहने का पर्पज यही है कि L जो है एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। एंड फिर आप ये भी निकाल सकते हो, जैसे L इक्वल टू क्या होती है, I ओमेगा होती है, तो यहाँ से ओमेगा भी निकालने के लिए कह सकते हैं आपको, दैट विल बी L बाई I, ठीक है। और L हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हो यहाँ से। तो कोई भी स्टेट का आपको ओमेगा पूछा जा सकता है, इनफैक्ट टाइम पीरियड पूछा जा सकता है टी विल बी हाउ मच, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर एनी गिवन स्टेट j. So you can calculate like this. First you have to calculate L, then omega, then T. So this is the relation, right? And then if you see the spectrum, rotational spectrum, as you have seen that you have a epsilon j, that is b into j plus on centimeter inverse, right? ये आपका फॉर्मूला है। और यहाँ से अगर आप सिलेक्शन रूल लगाएंगे, जो सिलेक्शन रूल होती है फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल spectra, that transition rule is how much, delta j equals to plus minus on, right? And if you see that spectrum for rotational spectra, that spectrum will contain many lines, but they are equally spaced. This side you have a centimeter inverse, or you can say wave number in centimeter inverse, and this side you have intensity. So you'll see that rotational spectrum contain many lines, but important चीज क्या है, they are equally spaced, और spacing between two successive rotational lines ये कितना होती है, जो स्पेक्ट्रा में मिलती है, स्पेसिंग कितना होती है एक्चुअली, टेल मी हाउ मच इज द स्पेसिंग, 2b. exactly it will be 2b, right? So that rotational lines are equally spaced, और जो spacing होती है that is 2b, and b you know how to calculate, right? So the parameters associated with rotational spectrum. Now if you see another important thing, जो आपका spectrum मिलती है rotational spectrum, the intensity is like initially the intensity will be increasing. It's not like that first intensity will be higher than lower. It's not like that. Situation is like that. Intensity initially आपको बढ़ता जाएगा, एक particular j के लिए आपका maximum होगा, फिर further decrement होगा. And this is happening because of degeneracy of jth level, that is 2j plus 1. अगर डिजेनरेसी हर एक लेवल का ऑन होते चलते तो फिर आपको इंटेंसिटी इनिशियली लोअर स्टेट के लिए आपको ज्यादा मिलता, शुरू का जो स्पेक्ट लाइन है इट विल हैव हायर इंटेंसिटी अगर जे का डिजेनरेसी ऑन होता तो, बट यहाँ पे डिजेनरेसी हर एक लेवल का बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप ऊपर स्टेट पे जा रहे हो, एंड डिजेनरेसी फॉर गिवन जे दैट विल बी 2j plus 1. So that's why that you will get intensity of rotational line. This side you have a wave number and this side you have a intensity. If you see that spectrum, the intensity will initially increase, but remember that gap is constant, that is 2b, and then further there will be decrement. And आपको पता है कि फॉर जैसे पॉपुलेशन होती है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन रोटेशनल क्वांटम नंबर j, और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो रोटेशनल स्टेट पर होगा, है ना, रोटेशनल क्वांटम नंबर पर है, दैट इज kbt by 2acb minus 1. So this is the expression for state, or this is the expression for rotational quantum number having highest population, है ना। तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपका टेम्परेचर, दिस इज केबीटी, राइट, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड रोटेशनल constant b. So this is the expression which represent the population of j prime is actually maximum. J prime represent the rotational quantum number having highest population among all other state.
ओके, तो ये डायरेक्टली भी गिवन हो सकती है और आपको पूछा जा सकता है कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है ना जी। देन यू हैव ए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। Then you have a vibrational spectra. As you know, this spectra arise when the frequency range, that is 3 into 10 to the power 12 hertz to 3 into 10 to the power 14 hertz, right? And this lie basically in IR region, and that's why it is called IR active or IR spectra. When you shine a photon lie in IR region, then heteronuclear molecule will show vibrational spectra because bond is not actually bond between atom is actually flexible. Okay, so basically heteronuclear molecule, for example HCl, CO2, CO, such kind of molecule is IR active because they have permanent electric dipole moment. Now if you see that energy, if you consider that vibration is like a harmonic oscillator, vibration is like a harmonic oscillator, then the potential will take form V of x, that will be half kx square, and the energy of vibration, that will be h new oscillation into V plus half, where V is called vibrational quantum number, and V will be 0 for ground state, will be on for first excited state, 2 for second excited state, and so on. Where nu is nu OSC, this is called oscillation frequency, and that will be on by 2 pi root over k by mu, right? Root over 2 by on by 2 pi root over k by mu, where k is the force constant and mu is the reduced mass of a system. एंड इन फैक्ट ये कभी बहुत बार यूज होती है फॉर्मूला, जैसे एच न्यू ऑसिलेशन v प्लस हाफ, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, हाफ के ए स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो आपको कोई ग्राउंड स्टेट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको कोई एक मॉलिक्यूल गिवन होती है और वहां पे फोर्स कांस्टेंट गिवन होती है, और पूछा जाता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। तो बेसिकली मेरा कहने का पर्पज ये है, ये जो एनर्जी है दैट यू कैन रिलेट विथ हाफ के ए स्क्वायर, है ना, एंड ए इज द एम्पलीट्यूड और के इज द फोर्स कांस्टेंट। तो ये काफी बार यूज होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, and in terms of this energy, in terms of joule, right, joule or electron volt, if you calculate in terms of wave number, then epsilon v will be ev by hc, right, ev by hc. Now if you do this, you will get omega e into v plus half, and of course the unit will be centimeter inverse, right, centimeter inverse. And you know v can again take values 0 on 2 3 and so on. Now see that it contains that discrete energy. This is a discrete energy, right? If you plot it, so you'll have epsilon v this side, and this side you have a x. But important thing that spacing between two successive vibrational levels, that is actually constant. है ना, this is b equals to 0 on 2 3 and so on. ये जो स्पेसिंग है दो सक्सेसिव लेवल्स के बीच में, ये आपका कांस्टेंट है एक्चुअली। ये आपका कितना है, दैट इज योर ओमेगा ई। ठीक है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आपका स्पेक्ट्रम का जो सिलेक्शन रूल है,
rule, that is delta V equals to plus minus on. If you apply this on the spectrum, it will contain a single line. When you consider vibration of molecule is a harmonic oscillator, it will contain a single frequency. It will contain a single frequency located around omega e. However, experimentally आपको क्या मिलता है? Experimentally और भी कुछ आपको lines मिलता है that these lines are low intense and they are called overtone. So this first overtone will be around twice omega e, second will be around thrice omega e, and so on. ठीक है ना? So why this overtone? Because of anharmonic behavior of molecule. The oscillation of molecule is not actually harmonic oscillation, rather it is anharmonic oscillation where the potential is half kx square minus gx cube. This is called anharmonic term and this is your harmonic term. So altogether this potential is called anharmonic oscillation. And the energy associated with this anharmonic oscillator, if you write in terms of directly in terms of wave number, so it will be like omega e then v plus half, right? And then omega e xe v plus half ka square, right? Where x called xe is actually much smaller than on, okay, and this is called anharmonicity. This is called anharmonicity. Okay. Now to describe that many lines in vibrational spectra, you have a fundamental band that is highly intense, and in addition to this, they have many overtones. To describe that overtones, there's a selection rule for anharmonic oscillator, and that selection rule here, that selection rule is not bounded to delta V equals to plus minus on, but it is also allowed plus minus 2, plus minus 3, and so on. And from here we have described that all bands, right? So if you remember that you have a fundamental band. So first of all, you have a fundamental band in anharmonic oscillation. So fundamental band means when you have a transition of molecule from 0 to on, the photon associated, wave number of photon associated with this transition, that will be epsilon on minus epsilon 0. 1 is vibrational quantum number, as 0 is also vibrational quantum number. So if you substitute this epsilon 1 and epsilon 2, how much you will get basically? कितना आएगा जी? Omega e into 1 minus twice xc. This is the location of fundamental band in spectrum. Then you have a first overtone. Right? First overtone, observe when there is a transition, vibrational transition from 0 to 2. And the wave number associated with this photon will be epsilon 2 minus epsilon 0. And this, if you calculate, कितना आती है यहाँ पे? Twice omega e, then 1 minus thrice xc, right? Right? The situation. Next, you have second overtone. Next, you have second overtone, right? Second overtone. And this second overtone is basically observed when there is a transition, vibrational transition from ground state to second excited state, which means that the transition from V equals to 0, this is a ground state to second excited state. And the wave number of associated photon can be written as epsilon 2 minus so यहाँ पे हम लोगों ने ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, राइट? नहीं जी, आपका 3 हो जाएगा, राइट? Yes. हाँ, so 3 2 or 0, right? It will be 3 2 0. So this photon, if you calculate the wave number of associated photon, this will be thrice omega e into 1 minus 4 xc.
and of course that unit will be here, unit will be centimeter inverse. So this is the location of fundamental band, first overtone and second overtone. In addition to this, this on hot band observed only at high temperature, because the molecule in general found in ground state, if you increase the temperature at hot temperature, there will be molecule at excited state also, and then you can see that there's a hot band also, hot band, right? And this is because at only high temperature this band observed, and there's a transition of molecule from on to 2, right? And the wave number associated with this photon will be how much? Epsilon 2 minus epsilon on, and that will be omega e into 1 minus 4 xe, right? Of course that unit here will be centimeter inverse. So this will be the location of band. The location of band, right? And then you have further something called dissociation energy. Something called dissociation energy, right? You see that spectrum. This side you have a epsilon, and this side you have a x, right? So that plot of curve is like this. So you'll have dissociation energy means what? तो मॉलिक्यूल बेसिकली आपका v cost 0 पे होती है ना, उसको this will be the that last level, when that bond length is infinity. So these are the vibrational level for anharmonic oscillator. This level is having vibrational quantum number, that is Vmax, and associated energy E epsilon m. In that scenario, that bond length will be infinity, because that molecule and this end is not free, right? This end is free, right? This can oscillate up to infinity. So here the bond length will be infinity, so molecule will be dissociated. So energy needed to pump the molecule, to excite the molecule from v equals to 0 to v max, this will be the dissociation energy. And for this, as you know, that you have a epsilon v equals to omega e into v plus half minus omega e xe v plus half square, right? So at Vmax, basically what will happen, that delta E, because here energy is maxima, right? So delta E by delta V at Vmax will be 0. If you do this, then you'll get the expression for maximum vibration level 1 by twice Xc minus. So this by from this expression is saying how many or maximum number of vibrational levels exist in anharmonic oscillator, that depends upon anharmonicity. So ये फॉर्मूला भी काफी यूज होती है कि कितना नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल पॉसिबल है आपके मॉलिक्यूल में. सो आप वो डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर आपको एक्सई और एनहार्मोनिसिटी पता है तो. This is also important. Now there's a concept of dissociation energy. So dissociation energy will be how much? ED, that will be energy needed, that will be Hc into epsilon m minus or epsilon max, whatever you have taken, minus epsilon 0. Okay, so if you calculate, you will have Hc, then omega e by 4xe minus omega e by 2, then omega e xe by 4. So this will be the energy, or this is the dissociation energy or energy needed to dissociate the molecule. That will be Hc omega by 4xe minus omega e by 2 plus omega e xe by 4. This is the energy needed. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, ठीक है ना. आपको गिवन क्या रहेगा? ओमेगा ई गिवन रहेगा, एक्स गिवन रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि डिसोसिएशन एनर्जी कितना है मॉलिक्यूल का, ठीक है.
ठीक है जी. Then next you have rotational vibrational spectra. As born Oppenheimer approximation says, there's no pure vibrational spectra is possible. You can get pure rotational spectra, but pure vibrational spectra is not possible. Okay, so there's a concept of vibrational rotational spectra. So the energy, total energy of a molecule contain rotational energy plus vibrational energy. So that will be omega E V plus half minus omega E x E V plus half ka square. Right? Then you have a B J into J plus 1, right? Now there's a, I mean that this wave number of associated photon, for rotational vibrational transition, that will be represented as epsilon j double prime v double prime minus epsilon j prime v prime. If you apply that selection rule here, or if you restrict it to v double prime equals to 0 and v prime equals to 1, then you will get this energy that will be omega E into 1 minus twice xc, right? And then you have b prime j prime plus 1 minus b double prime j double prime plus 1. तो यहाँ पे b जो है चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूल का जब एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में चला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको डिफरेंट बी लेना पड़ेगा. देन देयर विल बी टू केसेस. वन इज कॉल्ड आर ब्रांच, and that is when j prime minus j double prime equals to plus 1. Now if you substitute that in this expression, if you substitute that j prime equals to 1 plus j double prime, then you will obtain that expression for R branch, and that will contain omega e 1 minus twice xc. सर हाँ जी सेम मॉलिक्यूल का बी कैसे बदलेगा? हाँ, बी बदलेगा ना. जैसे आपका एक वाइब्रेशनल, एक साथ आपका क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, राइट? v इक्वल्स टू 1. इसके एसोसिएटेड क्या है, एक हर एक वाइब्रेशनल लेवल का एसोसिएटेड क्या है आपका रोटेशनल लेवल है. लेट अस टेक दिस इज योर j डबल प्राइम, दिस इज द j डबल प्राइम, और इसका एसोसिएट भी आपका क्या है, रोटेशनल लेवल है. एक एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर कई सारे रोटेशनल लेवल्स होती है. ओके, अब क्या है, जब आपका मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में चला जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का देखो बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा. देखना वाइब्रेशनल जो आप ये ड्रॉ करते हो डायग्राम, यहाँ ड्यू टू एनहार्मोनिसिटी क्या होगा मॉलिक्यूल का, जब एक लेवल से दूसरे लेवल में चला जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द एसिमेट्रिक नेचर ऑफ योर दैट भी है ना. तो इसीलिए क्या है आपका, जैसे एक मॉलिक्यूल इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन होगा, उस टाइम एट द सेम टाइम दैट मॉलिक्यूल विल चेंज रोटेशनल लाइन आल्सो. यहाँ से यहाँ कोई रोटेशनल लाइन में ट्रांजिशन होगा. तो जब मॉलिक्यूल रोटेशनल वाइब्रेशनल में एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में चला जाएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगा. और आपको पता है जो बी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ का स्क्वायर होती है. तो इसीलिए क्या होगा, आपको डिफरेंट बी लेना पड़ेगा. ये आपका ग्राउंड स्टेट का बी है और ये एक्साइटेड स्टेट का बी है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट का बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम होता है. So now we'll obtain that expression for R branch, that will be omega e 1 minus twice xc, and then we'll have twice b prime, right? Twice b prime, then 3b prime minus b double prime j double prime plus b prime minus b double prime j double prime ka square. Of course, unit will be centimeter in mass. So this will be the expression for R branch. And if you apply that selection rule here, j prime minus j double prime, that is minus 1, that will provide you p branch. That is the case number 2. That will provide you p branch. That is the case number 2. Now if you substitute in the original expression that j prime, यहाँ पे जो expression थे आपके, वहाँ पे अगर j prime equals to j double prime minus 1 substitute करेंगे आप यहाँ पे,
तो आपको मिल जाएगा द लोकेशन ऑफ पी ब्रांच एंड दैट यू कैन राइट एज ओमेगा ई ऑन माइनस ट्वाइस एक्स सी then minus b prime plus b double prime j double prime plus b prime minus b double prime j double prime ka square. So this is the location of p branch. You'll get many lines associated with r branch and p branch by taking different j double prime, right? So ऑब्वियसली आपका जो पी ब्रांच होगा वो आपका सेंट्रल जो लाइन है उसका लेफ्ट हैंड साइड में लोकेट करेगा कि ये टर्म भी आपका नेगेटिव है, इसके सामने नेगेटिव है, और बी डबल प्राइम थोड़ा सा ज्यादा होती है बी प्राइम के कंपैरिजन में, तो भी आपका क्या है सेकंड थर्ड टर्म भी आपका नेगेटिव है, सेकंड टर्म भी नेगेटिव है. सो दिस द लोकेशन ऑफ सेंट्रल बैंड. इसके एसोसिएटेड आपका पी ब्रांच मिलेगा जो लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा, बट आर ब्रांच क्या होगा राइट हैंड साइड में लाई करेगा. बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आर ब्रांच के एसोसिएटेड आपका बैंड हेड है. बैंड हेड मतलब जहाँ पे जिस आर ब्रांच का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो और वेव नंबर मैक्सिमम हो, दैट लोकेशन ऑफ बैंड हेड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो लोकेशन ऑफ बैंड हेड इन आर ब्रांच दैट इज हाउ मच, क्या एक्सप्रेशन है इसका बताओ? So it is like a nu zero bar, central frequency minus central frequency, and that frequency, in fact, you can write this frequency you can write on omega e on minus twice xc, then b prime plus b double prime का square divided by 4 b prime minus b double prime. तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपका b prime b double prime प्रोवाइड होंगे और आपको लोकेशन ऑफ बैंड हेड आपको पूछा जा सकता है. सो दिस द बैंड हेड मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी in the R branch. So bandhead basically observed in the R branch, and this is the expression for R branch. इस ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है इसका एसोसिएटेड. ठीक है. Then you have a Raman spectra. Then you have a Raman spectra. So suppose you have a sample of solid or liquid or gas. If you shine a photon, having energy in the UV or visible region. Okay, you shine a photon having energy h nu 0. Of course, the h nu 0 should belongs to either UV or visible, and wave number nu 0 bar. Then at the output, you'll get three different frequency. One is called a Rayleigh line having same frequency as इंसिडेंट लाइट. ओके, तो इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर गिवन होगा, एक लाइन का फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर उतना ही होगा. एंड देयर विल हैव वेव नंबर हायर देन द वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट इज कॉल्ड एंटीस्टोक लाइन. एंड अनदर विल हैव वेव नंबर स्मॉलर देन वेव नंबर ऑफ ओरिजिनल लाइन न्यू जीरो बार. दिस इज कॉल्ड स्टोक लाइन. ठीक है. Now see that जो आपका रैले लाइन है, आई मीन दैट रमन शिफ्ट जो है डेल्टा न्यू प्राइम, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन द वेव नंबर ऑफ रैले लाइन माइनस स्टोक लाइन, है ना. दैट इज एक्चुअली सेम एज शिफ्ट इन द वेव नंबर ऑफ एंटी स्टोक लाइन माइनस रैले लाइन, बिकॉज रैले लाइन का लोकेशन कहाँ पे होती है? दैट इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर न्यू जीरो बार जो आपका ओरिजिनल वेव नंबर है. तो रामन शिफ्ट डेल्टा न्यू को बोलते हैं बिकॉज इफ यू सी दैट स्पेक्ट्रम, इट इज लाइक यू हैव ए
highly intense rally line, then you will have anti-stoke line having smaller frequency or wave number. जो रैली लाइन होती है इसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और एंटी स्टोक लाइन रैली लाइन के राइट में बिलोंग करते हैं और इसका इंटेंसिटी सबसे कम होती है, और सबसे उसके बाद इंटेंसिटी होती है स्टोक लाइन का, है ना। सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रैली लाइन एंड दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक लाइन एंड दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ स्टोक लाइन। जो रैली लाइन का इंटेंसिटी होती है दैट इज मच मच ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ स्टोक लाइन, एंड ऑल्सो that rally line का intensity is much greater than intensity of anti-stoke line. In fact, the stoke line is having higher intensity as compared to anti-stoke line. और ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट को मतलब ये आपका एंटी-स्टोक लाइन का लोकेशन है, noted as this side you have a wave number, right? So this side you have anti-stoke line का लोकेशन है, and this is your rally line location, and this is the location of stoke line. ये जो शिफ्ट है ये शिफ्ट सेम है, आई मीन difference in the wave number of anti-stoke line and rally line, or difference in the wave number of rally line and stoke line, that difference same, and that is actually nu 0 bar minus nu SL bar, and that is same as this shift. यहां से आपको ये रिलेशन आ जाएगा, वो है 2 by lambda 0, 2 by lambda 0 equals to 1 by lambda stoke line plus 1 by lambda anti stoke line. ठीक है, तो यहां से दो lambda 0 है, that is the wave number of rally line, and that will be same as sorry, lambda 0 wavelength of rally line, and that will be same as the wavelength of incident photon. तो यहां से आपको दो wavelength given होगी, lambda SL मतलब wavelength of anti stoke line, the wavelength of stoke line. So दो wavelength given होगी और एक का आपको पूछा जाएगा, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, और जो आपका इंटेंसिटी बेसिकली होती है इंटेंसिटी ऑफ स्टोक लाइन टू दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टोक लाइन, ये जो रेशियो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, बताओ। सपोज आई एम टेकिंग टू लेवल्स, you have a two levels, the ground state having energy E1 with degeneracy of this level G1, the excited state E2 having degeneracy G2, ठीक है ना। तो जो एंटी स्टोक लाइन होती है वो ग्राउंड स्टेट के लिए आते हैं, राइट, और सॉरी स्टोक लाइन जो अराइज होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ग्राउंड स्टेट, एंटी स्टोक लाइन अराइजिंग बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे आपको जो इंटेंसिटी रेशियो मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजेनरेसी का फैक्टर आएगा G1 by G2 into e दी पावर, अगर सपोज मान लो ये सेपरेशन आपका h न्यू है, दैट विल बी e दी पावर h न्यू by kbt। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज मान लो ये दोनों लेवल आपका वाइब्रेशनल लेवल है, इफ टू दिस लेवल आर वाइब्रेशनल लेवल देन वाइब्रेशनल लेवल के लिए जी डिजेनरेसी क्या होती है, बेसिकली ऑन होता है। तो फिर अगर ऑन रखोगे यहाँ पे तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टोक लाइन टू दैट ऑफ एंटी स्टोक लाइन, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी ई दी पावर h न्यू बाई kBt, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फैक्टर हमेशा हमेशा आपका ग्रेटर देन ऑन होते हैं, इसका मतलब स्टोक लाइन का इंटेंसिटी एंटी स्टोक लाइन से ज्यादा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली आपका मॉलिक्यूल ज्यादा आपका एक्साइटेड स्टेट पे आना शुरू करेगा, राइट। इनिशियली तो कम होती है नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट पे आएगा, सो ऑब्वियसली आपका इंटेंसिटी जो है एंटी स्टोक लाइन का बढ़ता जाएगा, इसीलिए आपका ये रेशियो भी कम होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। और जो आपका रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा है ना, you have a two type of Raman spectra, that is you have a rotational Raman spectra, rotational Raman spectra, Raman spectra। इसमें आपका सिलेक्शन रूल है डेल्टा जे इक्वल टू 0, दैट इज फॉर रैले लाइन, और डेल्टा जे इक्वल टू +2 दैट इज फॉर स्टोक लाइन, and delta j equals to -2 that is for anti-stoke line, right।
the selection rule. Now if you see that wave number associated with a Stoke line in rotational Raman spectra, that will be a nu 0 bar, location of Rayleigh line minus 4b j plus 3 by 2. Okay, so j equals to, j can take value 0, on, 2, 3 and so on. So j equals to 1 means first Stoke line, 0 means 0 means first location of first Stoke line, 1 means location of second Stoke line, 2 means location of third Stoke line and so on. This is the location of your Stoke lines. Okay, that will be nu 0 bar minus 4b j plus 3 by 2. But if you see that anti-Stoke line, location of anti-Stoke line nu bar ASL, that will be nu 0 bar plus 4b j plus 3 by 2. 4b j plus 3 by 2. लोकेशन ऑफ एंटी स्टोक लाइन, और यहाँ से आपको जो मिलेगा j again can take value 0, 1, 2, 3 and so on, and corresponding you will get the location of anti-stoke line. 0 means location of first stoke line, on second 0 means first anti-stoke line, on means second anti-stoke line and so on. You see that spectrum, rotational Raman spectrum, that then will have, first you will have highly intense Rayleigh line, and on the right side you will have a intensity, or you have a anti-stoke line, and so on. This is the anti-stoke line. You will have many line. This is the Rayleigh line, and this side you will have a stoke line. ठीक है, ये separation जो है, this separation, this is the first anti-stoke line and this is the Rayleigh line. First जो separation है, that is 6b, and separation between Rayleigh line and first this is the separation between first anti-stoke line and Rayleigh line, that will be 6b, and separation between Rayleigh line and first stoke line, that will be 6b. उसके बाद जो separation between two successive anti-stoke line for any cases, that will be 4b, and separation between two Stokes line for any order you will get, that will be 4b. Okay, and separation between first Stoke line and anti-stoke line, that will be 6b plus 6b, that will be 12b. And you know what is b actually, right? B is nothing but h by 8 pi square IC. So ये आपका इसके बेस्ट पे प्रॉब्लम दे सकता है ना, काफी बार आते भी है. Then you have a vibrational Raman spectra. You have a vibrational Raman spectra. In vibrational Raman spectra, again you have a selection rule like delta V. Change in vibrational quantum number, there's 0 for Rayleigh line, and it's plus 1 for for Stoke line, and minus 1 for anti-Stoke line. Okay, if you see the spectrum here, that position of Stoke line in vibrational spectra, that will be nu 0 bar minus omega e into 1 minus twice xc. And position of anti-Stoke line, that will be nu 0 bar plus omega e 1 minus twice xc. Okay, so you'll have spectrum like you have a first intense Rayleigh line, and on the right hand side you have an anti-Stoke line, and on the left hand side you will have a Stoke line. So this is the Rayleigh line, the anti-Stoke line, and the Stoke line. This separation or Raman shift, that is omega e into 1 minus twice xc, and this separation is same actually, है ना. यहाँ पे पिक्चर फिगर में नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये आपका सेम होता है. दिस इज ऑल्सो ओमेगा ई into 1 minus twice x. So this is all about your molecular physics. Whatever we have discussed so far, based on this discussion, you will get question. So be ready. Okay, so this is all about your molecular physics. Okay, then see you.